नमस्कार। कल शाम को राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में सर्वप्रथम देश और विदेश में रहने वाले सभी भारत के लोगों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, संविधान के लागू होने के दिन से लेकर आज तक हमारी यात्रा अद्भुत रही है और इससे कई अन्य देशों को प्रेरणा मिली है। प्रत्येक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तब एक राष्ट्र के रूप में हमने मिलजुल कर जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका हम उत्सव मनाते हैं। इंडिया इज होम टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग civilization. India is called the mother of democracy. As a modern republic, however, we are young. In the early years of independence, we faced countless challenges and adversities. Yet, the spirit of India was undeterred. With hope and confidence, we began an experiment unique in the history of humankind. We did so with the belief that we are, after all, one, that we are all Indians. We have succeeded as a democratic republic because so many creeds and languages have not divided us, they have only united us. That is the essence of India. That essence was at the heart of the Constitution, the outcome of the freedom struggle. The national movement, led by Mahatma Gandhi, was as much as about winning independence as about rediscovering our own ideals. Those decades of struggle and sacrifice helped us win freedom not only from colonial rule but also from the imposed values and narrow worldviews, to help us learn about our age-old values of peace, brotherhood, and equality. Those who shaped the modern Indian mind also welcomed progressive ideas from abroad, following the Vedic advice, A no bhadra kratvo yantu vishwataha. Let noble thoughts come to us from all directions. The nation will always remain grateful to Dr. B.R. Ambedkar, who headed the drafting committee of the Constitution. On this day, we should also remember the role of jurist B.N. Rao, who had prepared the initial draft, and other experts and officers who helped in making of the Constitution. We are proud of the fact that the members of that assembly represented all regions and communities of India, and that they included 15 women too. India has been transformed from a largely poor and illiterate nation into a confident nation marching on the world stage. This would not have been possible but for the collective wisdom of the constitution makers guiding our path. We have largely remained true to their expectations, and yet we realize that much remains to be done to realize Gandhiji's ideal of Sarvodaya, the upliftment of all. Yet the progress we have made on all fronts is encouraging. सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह उल्लेख करना जरूरी है कि यह उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह सरकार द्वारा समय पर किए गए सक्रिय प्रयासों द्वारा ही संभव हो पाया है।
इस संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति जन सामान्य के बीच में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। यह बड़े ही संतोष का विषय है कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। मार्च 2020 में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अमल करते हुए सरकार ने उस समय गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। इस ऐतिहासिक कदम से सरकार ने कमजोर वर्गों को आर्थिक विकास में शामिल करने के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। The National Education Policy has introduced ambitious changes. The policy makes our civilizational lessons relevant for contemporary life while also preparing the learner for the 21st century challenges. Technology offers life-changing possibilities. The Digital India Mission is striving to make information and communication technology inclusive by bridging the rural-urban divide. We have reasons to be proud of our achievements in the domain of science and technology. India has been among the handful of pioneers in space technology. As long-pending reforms are now underway, private enterprises are now invited to join the quest. The Gaganyaan program to carry Indian astronauts into the space is under progress. Yet, even as we reach out to the stars, we keep our feet on the ground. Women's empowerment and gender equality are no longer mere slogans, as we have made great progress towards these ideals in recent years. With people's participation in Beti Bachao, Beti Padhao campaign, women's representation has been rising in every sphere of activity. I am amazed by the confidence of young women. They are the ones who will do most to shape tomorrow's India. What miracles cannot be achieved if this half of the population is encouraged to contribute to nation building to the best of their ability. The same vision of empowerment guides the government's approach to the marginalized communities. In fact, the aim is not only to remove hurdles and help them in development, but also to learn from them. Tribal communities in particular have rich lessons to offer in many areas, ranging from protecting the environment to making the society more cohesive. विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है, उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली हैं। इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर हैं। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। As G20 represents about 2/3 of the world population and around 85% of the global GDP, it is an ideal forum to discuss and find solutions for global challenges. To my mind, global warming and climate change are the most pressing among them. The poor bear the brunt of global warming more than others. Developing and popularizing alternative sources of energy is one of the solutions. India has taken a commendable lead in this direction by giving a policy push to solar energy and electric vehicles. To maintain the balance between development and environment, we have to look at the ancient traditions with a new perspective. We must once again rekindle that respect for nature and humility before the vast universe. Let me state here that Mahatma Gandhi was a true prophet of our times.
as he foresaw the calamities of indiscriminate industrialization and cautioned the world to mend its ways. We need to modify our lifestyle if we want our children to live happily on this fragile planet. One of the changes suggested pertains to food. I am happy to note that the United Nations accepted a suggestion from India and declared 2023 as the International Year of Millet. Coarse grains like millets are eco-friendly as they require less water to grow, and yet they produce high levels of nutrition. I commend the roles of farmers, workers, scientists, and engineers whose combined strength enables our country to live up to the spirit of Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I appreciate every citizen who contributes to the nation's progress. I also convey my greetings to our diaspora, the great ambassadors of India's culture and civilization. In the end, राष्ट्रपति जी said, मैं उन बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना करती हूँ जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और किसी भी त्याग तथा बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। देशवासियों को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने वाले समस्त अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के बहादुर जवानों की भी मैं सराहना करती हूँ। हमारी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बलों के जिन वीरों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, मैं उन सब को सादर नमन करती हूँ। मैं सभी प्यारे बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए हृदय से आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी देशवासियों के लिए एक बार फिर मैं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।